हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकिता राय। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टिश्यू सिस्टम इन प्लांट बॉडी में के बारे में पढ़ा था एंड इन दैट वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि 3 पोर्शंस होते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के, एपिडर्मिस, देन द स्टोमाटा विच इज़ प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस और एपिडर्मल अपेंडेजेस। तो उसमें हम लोगों ने स्टोमाटा का पूरा स्ट्रक्चर देखा कि डाइकॉट प्लांट्स में, मोनोकॉट प्लांट्स में किस तरीके का डिफरेंट शेप्स ऑफ स्टोमाटा दे आर प्रेजेंट एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा और व्हाट इज द peculiarity of stomata in dicot and monocot leaves actually. So in this lecture we'll be discussing about the key points of stomata. वही जो stomata हम लोग previous lecture में पढ़े थे through figures और through diagrams, इस lecture में we will be discussing about the key points of those stomata. Stomata का हम लोग key points study करेंगे and we will also be discussing about the third point or the third part of the epidermal tissue system which is the epidermal appendages that includes trichome and root hair, and इसके साथ साथ हम लोग ground tissue system के बारे में जानेंगे. So we'll start with the key points of stomata. So these stomata, they are the structures that are present in the epidermis of leaf. कल हम लोगों ने already उस figures diagram में देख लिया था. Now these are responsible for 2 important functions. One is the gaseous exchange and the other is the transpiration process. Now stomata actually consist of guard cells that encloses the stomatal pore. So it basically consists of 2 kidney or bean guard shaped cells that encloses the stomatal pore. Now ये जो stomatal pore होता है, जैसे कि कल हम लोगों ने देखा था, इसमें there was, अगर मैं एक छोटा सा overview बनाऊं, so this was something like कुछ इस तरीके का था and this was, इसमें क्लोरोप्लास्ट थे और ये सब्सिडरी सेल्स थे so this is actually the stomatal pore and this is the guard cell. Alright, so ये जो stomatal pore होता है, this opening जो opening and closing mechanism होता है stomata का, that is actually regulated by guard cell. ये हम लोगों ने already discuss किया था. So opening and closing mechanism of stomata is regulated by guard cells. So accumulation of water and ions like potassium and chloride in the guard cell, that will result into opening of stomata. Okay, so this was all about the key points of stomata जो कि important role play करते हैं gaseous exchange and transpiration में. dicot leaf and monocot leaf में इनका shape अलग अलग होता है and जो opening and closing mechanism है वो इसी guard cell से regulated होता है. guard cells also contain chloroplast. ये जो guard cells होते हैं, there is one point left which is guard cells contains chloroplast. ये क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करता है. वाटर एंड आयंस लाइक potassium and chloride after getting accumulated in guard cell results into the opening of stomata. Blue light stimulates the stomatal opening and this was about subsidiary cells. Stomatal apparatus जिसमें कि 3 का combination होता है, stomatal pore, guard cell and subsidiary cells, and this was all about the key points of stomata. The next will be which we'll be dealing with is the epidermal appendages. Now epidermal appendages में मैंने already आपको बताया था कि epidermal appendages में 2 parts होते हैं. One is that of root hair, एक तो root hair हो जाएगा, and the other is trichome which is stem hair. Alright. Now this root hair, these are Alright, so this was about
रूट हेयर, तो रूट हेयर यूनिसेल्युलर एलोंगेशंस के बने होते हैं जो कि एपिडर्मिस ऑफ द रूट्स, एपिडर्मिस ऑन द प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द एपिडर्मिस ऑफ रूट्स, एंड देयर मेन फंक्शन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ट्राइकोम्स, these are ये यूनिसेल्युलर होते हैं, these are मल्टीसेल्युलर एलोंगेशन जो प्रेजेंट होते हैं, and their main function is to prevent excess loss of water on the surface of epidermis. So this was the function of root hair and ट्राइकोम, और ये जो कि एपिडर्मल अपेंडेजेस को इंक्लूड करता है. सो दिस फिनिशेस द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. जैसे कि हम लोगों ने कल देखा था कि 3 तरीके की टिश्यू सिस्टम प्लान बॉडी में है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम. तो दिस वाज, ये जो 3 पार्ट्स थे, एपिडर्मिस, स्टोमाटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस, ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को कवर अप करते हैं, कंप्लीट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज दैट ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तो ये वो टिश्यू सिस्टम्स होते हैं जो कि बेसिकली जितने भी अगर हम उन टिश्यूज़ को ले लें विच इज़ दैट एक्सक्लूड्स एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, तो वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आते हैं. सो ऑल दी टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट्स दी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में बेसिकली सिंपल परमानेंट टिश्यूज आते हैं, एंड दोज आर लाइक पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. ग्राउंड टिश्यू इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज जिसमें पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा होता है. एंड जो पेरेन्काइमेटर सेल्स होते हैं, दीज आर प्रोमिनेंटली फाउंड इन कॉर्टेक्स, पिथ, पेरिसाइकल एंड इवन मेड्यूलरी रेज ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स में ये पाए जाते हैं. एंड ये तो स्टेम्स एंड रूट्स की बात हो गई. बट इन केस ऑफ लीफ, जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ मीसोफिल सेल्स. वो मीसोफिल सेल का बना होता है, दैट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट. सो दिस वॉज अबाउट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो कवर अप करता है. तो ऑल द टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आएंगे. इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज दैट इज पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. पेरेन्काइमेटर सेल्स कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेड्यूलरी रेज ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स में पाए जाते हैं. एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम लीफ में है, जब हम बात करते हैं वो तो सिर्फ रूट्स एंड स्टेम्स की बात होगी. बट इन केस ऑफ लीफ, ग्राउंड टिश्यू इज एक्चुअली डिफरेंट. ग्राउंड टिश्यू डिफरेंट कॉम्पोजिशन का बना होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज मीसोफिल सेल्स, जो कि स्पॉन्जी टाइप होते हैं, यू नो, सर्कुलर और एलोंगेटेड शेप के होते हैं. विल बी डिस्कसिंग विद इन डिटेल जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे, मेन इसके यू नो लीफ के सेक्शन के बारे में जब हम पढ़ेंगे. एंड दैट मेसोफिल सेल्स, सिंस दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, सो दे आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस. सो दिस वाज अबाउट द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डिस्कसिंग अबाउट वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, किस तरीके का अरेंजमेंट होता है, वैस्कुलर टिश्यू में कौन कौन से कॉम्पोनेंट आते हैं और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं. विल बी डिस्कसिंग इट इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.